हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे चेक, एटीएम, शेयर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे अपन ने आज 4 टॉपिक कवर किए हैं। ओके, तो कौन से? चेक है, एटीएम है, शेयर्स एंड डिबेंचर है, एंड प्लस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो ये 4 टॉपिक अपन यहाँ पे आज कवर करेंगे। इसके मिक्स क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरा बैंक रिलेटेड है। शेयर्स एंड इंस्ट्रूमेंट निगोशिएशन एक्ट इसके रिलेटेड है। तो ये वीडियो जो है वो फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपकी और भी अच्छे प्रैक्टिस हो जाए। ओके, ये क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली मिल जाए। ओके, और एक बात की, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हैं। ओके, वो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जीके और कंप्यूटर कभी एंड नहीं होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे जो कंसेप्ट आएंगे वो हर बार थोड़े चेंज ही आएंगे। ओके, भले ही मैं यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन करके एंटर कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस और जो अपन ने मॉर्निंग में जो क्वेश्चंस अपन पढ़ते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। ओके, मतलब यहाँ के कंसेप्ट और वहाँ के कंसेप्ट थोड़े चेंज है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पूरे के पूरे टॉपिक कवर हो जाए कुछ टाइम पे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे दोनों वीडियोस, जो मॉर्निंग के वीडियोस है प्लस ये वीडियोस, दोनों वीडियोस आप देख लीजिएगा। प्लस डीआई के क्वेश्चंस भी मैंने ऐड करके रखे हैं, और प्लस कल मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर भी यहाँ पे ऐड करूंगा। बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं करूंगा, वो मुझे चलेगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर मैं यहाँ पे जरूर कल पोस्ट करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट का प्राइमरी फीचर जो होता है वो क्या होता है? अर्न इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस। ओके, जितना बैलेंस होता है उसके ऊपर ही अपने को क्या मिलता है? यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। और जो सेविंग अकाउंट होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए अपन बनाते हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, जस्ट एक सेविंग अकाउंट होते हैं। मतलब एक पर्सन का इंडिविजुअल अकाउंट, मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? सेविंग अकाउंट। देखो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देके रखा है। ओके, इट इज अ प्राइमरी डिजाइन फॉर इंडिविजुअल टू सेव मनी व्हाइल अर्निंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट, सेकंड, इन विच टाइप ऑफ अकाउंट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जनरली प्रोवाइडेड। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है वो होती है करंट अकाउंट में। ओके, करंट अकाउंट मतलब जो बिजनेस अकाउंट होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, मतलब इनडायरेक्टली एक लिमिट रहती है कि वो लिमिट तक आप अमाउंट क्या कर सकते हो? विड्रॉल कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर अमाउंट भी नहीं है बैलेंस में, बैलेंस नील है, फिर भी आप एक लिमिट तक क्या कर सकते हो? बैंक से एक टाइप का लोन ही ले सकते हो, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट। ओके, देखिए, करंट अकाउंट इज डिजाइन फॉर बिजनेस एंड ऑफर overdraft facility allowing customer to withdraw more than money available in their account to predefined limit. Okay, next, third, अब थर्ड यहाँ पे बोला है, which type of account is suitable for systematic saving with fixed deposit over regular interval। तो आंसर है यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जो सिस्टमेटिक सेविंग अकाउंट विथ फिक्स डिपॉजिट होता है। ओके, देखिए, रिकरिंग deposit account allows customer to fix deposit amount with the regular interval with the interest, okay, cumulative amount, making it suitable for discipline saving। Okay, next, fourth, what does the term white label ATM signify। अब white label मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि जो एटीएम ओन बाय नॉन बैंक एंटिटीज। ओके, यहाँ पे व्हाइट लेबल का मीनिंग क्या है? कि एटीएम ओन बाय नॉन बैंक एंटिटी। देखिए, व्हाइट लेबल आर ऑपरेटेड नॉन बैंक एंटिटी but allows customer of all bank to perform basic transaction like withdrawal and balance inquiry. They do not bear the branding of any particular bank। Okay, next, fifth, अब यहाँ पे फिफ्थ बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एटीएम। तो इसमें का कौन सा फंक्शन नहीं है? देखो, कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, लोन डिस्टर्बल एंड बैलेंस इंक्वायरी। तो लोन डिसबर्स, ये जो है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड एटीएम नहीं करता है। ओके, देखिए, एटीएम आर प्राइमरी डिजाइन टू कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी। लोन disburse require human interaction and additional documentation which cannot process through ATM। Okay, next, six, अब यहाँ पे क्या बोला है? विच ऑफ दिस इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेरार चेक। तो बेरार चेक का कंसेप्ट क्या है? टू पे टू द पर्सन टू होल्डिंग द चेक। मतलब जिसके पास चेक है वो क्या कर सकता है? डायरेक्टली कैश विड्रॉल कर सकता है, उसको बोलते हैं अपन बेरार चेक। ओके, देखिए, bearer check is payable to the person representing in it at the bank, making it transferable without endorsement. It is suitable for cash payment but carries a risk of misuse if lost। Okay, next,
7, व्हाट इज पोस्ट डेटेड चेक? पोस्ट डेटेड चेक मतलब क्या होता है? अ चेक डेटेड लेटर देन द करंट डेट, मतलब आज के डेट को छोड़ के नेक्स्ट 6 मंथ तक की कभी भी डेट अपन दे सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? पोस्ट डेटेड चेक। ओके, मतलब जो फ्यूचर की डेट रहती है, बराबर है। तो नेक्स्ट 8, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? तो यहाँ पे है फिक्स डिपॉजिट। ओके, देखिए चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर फिक्स डिपॉजिट अगर करते हैं रिसिप्ट, ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट 9th, बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ चेक एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? तो आंसर है 3 मंथ। ओके, एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द चेक इज वैलिड फॉर 3 मंथ from the date of issue. After this period, it becomes stale and cannot be encashed. Okay. Next, 10th, बोला है कि which of the following statement is true about the equity share? तो इक्विटी शेयर के बारे में क्या है? They represent ownership in the company, बराबर है। अब जो कोई भी अगर चाहे एक शेयर हो, 1 रुपए का शेयर हो, लेकिन वो शेयर का जो होल्डर है, ओनर है, वो क्या करता है? ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चाहे उसके पास कितने भी शेयर हो, 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, लाखों शेयर, लेकिन वो क्या कहलाता है वहां पे? ओनरशिप इन द कंपनी। ओके, नेक्स्ट 11th, डेबेंचर आर कंसिडर्ड एज, डेबेंचर किसको बोलते हैं अपन? लॉन्ग टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट को। ओके, जो भी डेबेंचर्स होते हैं अपने पास, वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। देखिए, डेबेंचर आर लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय कंपनी टू रेज अ फंड। They are backed by the creditworthiness of issuing entity and may or may not be secured by specific asset. Okay. Next, 12th, which of the following is नॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? तो देखिए 4 ऑप्शंस में से ट्रेजरी बिल, क्रेडिट ऑफ सर्टिफिकेट, इक्विटी शेयर्स एंड कमर्शियल पेपर। तो यहाँ पे है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो होती है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओके, देखिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी शेयर्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट आर नॉट पार्ट इन द मनी मार्केट। ओके, नेक्स्ट 13, What is the typical maturity period of certificate of deposit? तो इसका आंसर है 91 days to 1 year. Okay, देखिए certificate of deposit is a short term instrument with a typical maturity period ranging from 91 days to 1 year, issued by bank to individual and institutions. Okay, next 14, which of the following account is designed for Indian citizen living abroad to deposit इनकम ऑन ओवरसीज? तो आंसर है एनआरई अकाउंट। ओके, देखिए नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट इज अ रुपीज डिनोमिनेटेड अकाउंट दैट अलाउ इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड टू डिपॉजिट इनकम ऑन ओवरसीज। इट फैसिलिटेट इजी फंड रेपुटेशन विदाउट टैक्स implication in India. Okay, next 15, What is the minimum tenure of fixed deposit in most Indian bank? तो आंसर है 7 days। 7 days में अपन क्या कर सकते हैं? फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, देखो most Indian bank allows fixed deposit with the minimum tenure 7 days, making them the flexible and secure investment option for short term fund. Okay, next 16, which of the following technology is used to secure cardless transaction at ATM? तो आंसर है यहाँ पे क्यूआर कोड भी है, एनएफसी भी है और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है। इसलिए इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। कैश कार्डलेस जो ट्रांजैक्शंस होता है वो कॉम्बिनेशंस होता है टेक्नोलॉजी सच एज क्यूआर कोड, एनएफसी एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ओके, नेक्स्ट 17, what does the term PIN stand for in the context of ATM transaction? तो PIN मतलब क्या होता है यहाँ पे? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, पिन का फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट 18, which type of check require the payee to visit the specific branch to receive the payment? तो आंसर है यहाँ पे बैंकर चेक। ओके, बैंकर चेक इज issued by bank on the behalf of payer and is payable only at the branch where it was issued. It is commonly used for secure transaction. Okay, next 19, What is a dishonored check? Dishonored check मतलब क्या होता है? A check that is refused by the bank. Okay, देखिए a dishonored check when the bank refuse it process it often due to insufficient fund, mismatched signature or discrepancy of
check debtor है. Okay. Next 20. What does section 13 of Negotiable Instrument Act define? तो Negotiable Act section 13 जो होता है वो होता है negotiable instrument. देखिए section 13 of Negotiable Instrument Act 1881 define negotiable instruments such as promissory note, bill of exchange, check that are transferable by endorsement or delivery. Next 21. Which of the following is not required for promissory note to valid? तो यहाँ पे आंसर है यहाँ पे it must be payable to the bearer. Okay, देखा a valid promissory note must be writing unconditional or signed by the maker. It is not required to payable to the bearer. It also payable to the specified person. Okay. Next 22. What is the primary difference between the share and debenture? Share and debenture मतलब क्या? Share represent ownership and debenture represent debts. Okay, देखो share represent ownership in the company and gives the holder voting rights, while debenture are debt instrument that present borrowed fund and do not grant ownership. Okay. Next 23rd. Which of the following is best describe preference share? तो preference share का best describe क्या है यहाँ पे? A shareholder receive dividend before equity shareholder. Okay, देखिए preference holder are given priority in receiving dividend before equity shareholder. However, they usually do not have voting rights. Okay. Next 24. What is the maximum maturity period of commercial paper? तो commercial paper का maximum period होता है वो होता है 9 months का. देखिए commercial paper is unsecured short-term borrowing instrument with maximum maturity period 9 months, means 270 days. Okay, it is typically issued by large corporation to meet working capital needs. Okay. Next 25. Which entity regulates the issuance of treasury bill in India? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द इश्यूएंस ऑफ ट्रेजरी बिल which are short-term government security used to manage liquidity in financial system. Okay. Next 26. Which type of account is mandatory for companies to handle business transaction? तो आंसर है यहाँ पे करंट अकाउंट. ओके, देखिए द करंट अकाउंट इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शन without limitations on withdrawal or deposits. Okay. Next 27. Which type of account is exclusively available for minor under the age of 18? तो उनके लिए क्या होता है? Child saving account. Okay, देखिए a child saving account is still for minor, helping them develop saving habit. Such account have features like parental control and limited withdrawal facilities. Okay. Next 28. Which of the following limit is commonly associated with the ATM in India? तो आंसर है daily cash withdrawal limit. Okay, देखिए ATM often daily cash withdrawal limit that varies depending on the type of accounts and bank policy, ensuring control access to the fund. Next 29. Which type of ATM does not dispense cash but allow transactions such as fund transfer and bill payment? तो आंसर है नॉन कैश एटीएम. ओके, देखिए नॉन कैश एटीएम आर डिजाइन फॉर फंक्शन लाइक फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट एंड इंक्वायरीज एंड डू नॉट डिस्पेंस फिजिकल कैश. ओके. नेक्स्ट 30. Which type of crossing on a check specifies that it can only deposit into the account? तो आंसर है यहाँ पे account payee crossing. ओके, देखिए account payee crossing ensure the check can only be deposited into the account of the payee and cannot encash directly. Next 31. Which is the most secure method for transferring a check into another individual? तो आंसर है endorsing the check. ओके, देखो endorsing a check is a process of signing it to transfer ownership to another individual, ensuring a secured fund. Okay. Next 32. Which section of Negotiable Instrument Act 1881 deal with dishonor due to insufficient fund? तो आंसर है सेक्शन 138. ओके, देखिए सेक्शन 138 Negotiable Instrument Act 1881 specifies the legal consequence of dishonor of check due to insufficient fund, including penalties and legal action. Okay. Next 33.
what does the term holder in due course okay means under the Negotiable Instrument Act? तो आंसर है a person who hold the instrument without fraud. Okay, देखिए a holder due in course in a person who acquire negotiable instrument for consideration in good faith and without any defect in its title. Next, 34. Which of the following is the characteristics of convertible debenture? Okay, तो convertible debenture मतलब क्या? They can be converted into equity shares. देखिए, convertible debenture can be converted into equity shares of the issuing company after specific period, providing investor with the potential for capital appreciation. Okay, next 35. What is the significance of face value of share? Okay, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर मतलब क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड बाय द कंपनी. ओके, नेक्स्ट 36. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ट्रेजरी बिल? तो ट्रेजरी बिल मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ओके, नेक्स्ट 37. Which type of money market instrument is issued by financial institution to raise fund for a fixed term? तो आंसर है certificate of deposit. Okay, certificate of deposit are issued by bank and financial institutions to raise fund for a specific term, usually offering a fixed interest rate. Okay, next 38. Which account is designed for underprivileged section of society to promote financial inclusion in India? तो आंसर है जन धन योजना अकाउंट. ओके, देखिए द प्रधानमंत्री जन धन योजना एम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी offering no frill account to underprivileged individual to enhance financial inclusion. Okay, next 39. What is the primary feature of recurring deposit account? The recurring deposit account मतलब fixed monthly deposit for fixed tenure. Okay, देखिए a recurring deposit account allows customer to deposit a fixed amount every month for predetermined period and earn interest, making it ideal for systematic saving. Okay, next 40. What is brown label ATM? तो brown label ATM मतलब क्या होता है? ATM owned by service provider and leased to the bank. Okay, देखिए brown label ATM are owned by private sector provider but leased to bank. The service provider manage the hardware while the bank handle cash management and connectivity. Next 41. What is the role of white label ATM? White label ATM मतलब available for use by all bank customer. Okay, next 42. Which of the following is not a valid type of check? तो देखो चार चेक अपने पास है यहाँ पे, बेरार चेक, क्रॉस चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड फिक्स डिपॉजिट चेक. तो फिक्स डिपॉजिट ऐसी कोई चेक नहीं होता है. ओके, फिक्स डिपॉजिट का कोई चेक ही नहीं होता. ओके, नेक्स्ट 43. What happens when the post-dated check is presented for payment before the date mentioned? So it will be dishonored. Okay, post-dated check presented before the specified date, it will be dishonored. It cannot legally process before the mentioned date. Okay, next 44. Which section of Negotiable Instrument Act 1881 provide for the penalty for issuing a check without sufficient fund? आंसर है सेक्शन 138. ओके, देखिए सेक्शन 138 प्रोवाइड पेनल्टीज इंक्लूडिंग फाइन एंड इम्प्रिजमेंट फॉर द इश्यूएंस ऑफ चेक दैट आर डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड. ओके, नेक्स्ट 45. What is the maximum period allowed for presenting a check for the payment for the date of issue? तो आंसर है यहाँ पे 3 months. ओके, देखिए a check is valid for 3 months from the date of issuance, after which is become the stale and cannot process. Okay, next 46. What are equity shares are also known as? तो equity shares को ही अपन क्या बोलते हैं? कॉमन स्टॉक. ठीक है, देखिए इक्विटी शेयर आर ऑल्सो रेफर्ड टू ए कॉमन स्टॉक representing ownership in company and providing voting rights to the shareholder. Next 47. What is the purpose of issuing non-convertible debenture? तो non-convertible debenture मतलब क्या होता है? To raise debt without conversion to equity. Okay, देखिए non-convertible debenture are issued raise debt without options to convert them into equity, offering fixed return or to investor. Okay,
नेक्स्ट 48, which money market instrument is primarily used by commercial bank for inter borrowing? तो आंसर है यहाँ पे कॉल मनी. ओके देखिए, कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग फैसिलिटी इन द मार्केट, primarily used bank to manage their liquidity needs overnight basis. Okay, next 49, what is primary difference between commercial paper and certificate of deposit? तो आंसर है issued by financial institution versus corporation. Okay, देखिए, commercial paper is issued by corporation for short term funding, while certificate of deposit are issued by a financial institution to attract short term deposit. Okay, next 50, which financial instrument is considered risk free in the money market? तो आंसर है यहाँ पे ट्रेजरी बिल. ओके देखिए, ट्रेजरी बिल आर गवर्नमेंट इशूड एंड कंसिडर्ड रिस्क फ्री as they are backed by the government credit worthiness. Okay, next 51, which type of account is opened by individual residing outside India to deposit earning from abroad? तो आंसर है NRE account. ठीक है देखिए, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल account are opened by NRI to park their overseas earning in Indian currency, allowing tax free repatriation of fund. Okay, next 52, what is the primary purpose of demat account? तो demat account क्या करता है? To hold share and securities in electronic form. Okay, देखिए, demat account is used to hold share securities in dematerialized of electronic format, simplifying investment management. Okay, next 53, which of the following service is not typically available at ATM? तो देखिए, चार ऑप्शन दिए अपने को, कैश विड्रॉल, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग, फंड ट्रांसफर एंड मिनी स्टेटमेंट जनरेशन. तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग ये फैसिलिटी एटीएम अवेलेबल नहीं रहती. ओके, नेक्स्ट 54, what does the term ATM pin stand for? तो ATM pin मतलब फर्स्ट ऑटोमेटेड टेलर मशीन एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. ओके, ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन एंड पिन का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. नेक्स्ट 55, which of the following endorsement restrict the negotiability of check? तो आंसर है restrictive endorsement. ठीक है देखिए, restrictive endorsement specify condition that limit further negotiation of check, ensuring it is processed as per endorser instructions. Next 56, what is stale check? Okay, stale check मतलब क्या होता है? A check presented after 3 months from issue date, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? Stale check. Okay, next 57, which of the following is not a negotiable instrument under the act? तो आंसर है fixed deposit receipt. Okay, देखिए, fixed deposit receipt are not negotiable instrument act. Okay, next 58, what is the term bill of exchange that is payable on demand? आंसर है side bill. ठीक है, side bill is a payable immediately upon presentation on demand to the drawing. Okay, next 59, which financial term describe the portion of profit paid to the out of equity shareholder? तो आंसर है यहाँ पे dividend. Dividend is a portion of company profit distributed to its equity shareholder as reward for their investment. Okay, next 60, what does the term initial public offering IPO means? तो initial public offering मतलब first time sale of share by private company to public. Okay, देखिए, an IPO refers to the first sale of share company by private company to public to raise equity capital and transition into publicly traded entity. Next 61, which money market instrument is issued by company to meet their short term capital working needs? तो आंसर है यहाँ पे कमर्शियल पेपर. ओके देखिए, commercial paper is a short term unsecured promissory note issued by corporation to meet their working capital requirement. Okay, next 62, which type of money market instrument is used for borrowing or lending money for one day? तो आंसर है call money. ओके देखिए, call money refers to short term fund borrowed or lent for one day, often used by bank to manage liquidity. Okay, next 63 बोला कि which type of bank account earn interest but restrict the number of withdrawals allowed in the month? तो आंसर है saving bank. Okay,
जो सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट ऑफर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड लिमिट द नंबर ऑफ विड्रॉल टू प्रमोट सेविंग हैबिट्स. ओके, नेक्स्ट 64. व्हाट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट? कॉमनली रेफर्ड टू इज इन बैंकिंग टर्म. तो यहाँ पे होता है टर्म डिपॉजिट. ओके, देखिए, the fixed deposit account is also called as a term deposit, as a fund or deposit for fixed tenure and cannot be returned prematurely without penalty. Okay. Next, 65. What is the purpose of OTP based cash withdrawal? तो आंसर है फीचर एटीएम. ओके, देखिए फीचर एटीएम मतलब क्या? टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन. ओके, देखिए, द ओटीपी बेस्ड कैश विड्रॉल फीचर इंश्योर security by requiring one-time password for transaction, reducing the risk fraud. Okay. Next, 66. What is cash recycler machine? Okay, तो cash recycler मतलब क्या होता है? A machine that accept deposit and dispense cash. Okay, देखिए, the cash recycler machine can both accept cash deposit and dispense cash, making it versatile and convenient for customer. Next, 67. What does the term MICR stand for? A check. तो MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. ओके, ये चेक का जो नंबर होता है वो वैलिड करने के लिए अपन यूज करते हैं मैग्नेटिक इंक. ओके, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ चेक एंड फैसिलिटेट फास्टर प्रोसेसिंग. ओके, नेक्स्ट 68. What is the purpose of cross check? तो क्रॉस चेक का पर्पस क्या है? इट कैन बी ओनली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट. ठीक है, अ क्रॉस चेक इज अ मार्क विद टू पैरेलल लाइंस एंड कैन ओनली बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, इंश्योरिंग सिक्योर ट्रांजैक्शन. ओके, नेक्स्ट 69. Under which section of Negotiable Instrument Act in the dishonor of check for insufficiency of fund address? आंसर है सेक्शन 138. ओके, देखिए सेक्शन 138 डील विद डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड एंड प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर सच केसेस. ओके, नेक्स्ट 70. What is the maximum imprisonment penalty under the section 138 for dishonored check? तो आंसर है यहाँ पे 2 years. ओके, देखिए, the maximum imprisonment penalty under section 138 in 2 years. Okay, along with the fine that may be extended to twice a check amount. Okay, next 71. What type of debenture can be converted into equity share after a specific period? Answer है convertible debenture. Okay, देखिए, convertible debenture allows holder to convert them into equity shares after predetermined period, offering flexibility to investor. Next 72. Which term describe the nominal value of share? तो आंसर है उसकी face value. Okay, the nominal or face value of share is value state the share certificate presenting its basic worth. Okay, next 73. What is the minimum denomination for investing in treasury bill in India? तो आंसर है 10,000. Treasury bill are issued in denomination of rupees 10,000 and its multiples, making them accessible to wide range of investors. Next 74. What is the maturity period call money transaction? तो आंसर है 1 day. Okay, देखिए, call money refers to the fund borrowed or lent from 1 day only, making it only extremely short term money market instrument. Okay, next 75. Which of the following account is used by business for high frequency transaction without earning interest? तो आंसर है यहाँ पे करंट अकाउंट. करंट अकाउंट इज डिजाइन फॉर बिजनेस एंड डज नॉट अर्न इंटरेस्ट as meant is frequent and large volume of transaction. Okay, next 76. What is the primary feature of recurring deposit account? Recurring deposit account मतलब क्या होता है? Is a fixed monthly deposit for predefined period. Okay, देखिए, recurring deposit account allows customer to make fixed monthly deposit for predefined period. Next 77. Which technology in ATM provide added security by using EMV, Europay, Mastercard and Visa chips? Okay, तो इसका आंसर है चिप बेस्ड कार्ड. ओके, देखिए,
EMV technology is chip-based card, enhanced security by encrypting transaction data, making it difficult to duplicate or misuse. Okay. Next, 78. Which type of ATM is operated and owned by non-bank entity but still provide banking service? तो आंसर है white label ATM. Okay, white label ATM are not owned and operated by non-banking entities and offer standard banking service including cash withdrawal. Okay. Next, 79. What is bearer check? ये bearer check अभी पता ही है अपने को, स्टार्टिंग में देखे, a check payable to any person holding it. Okay. Next, 30. What is the effect of order check return on check? तो order check मतलब क्या होता है? It restrict encashment to person name on it. Okay. An order check is payable only the person whose name is mentioned on it and their authorized representative, ensuring secure payment. Okay. Next, 81. Which type of endorsement allows the transfer of ownership of negotiable instrument विदाउट फर्दर एंडोर्समेंट? तो आंसर है यहाँ पे ब्लैंक एंडोर्समेंट. ओके, देखिए, अ ब्लैंक एंडोर्समेंट इन्वॉल्व द एंडोर्सर साइनिंग विदाउट स्पेसिफाइंग न्यू पे, allowing the instrument to be transferred further by delivery. Okay. Next, 82. Which section of Negotiable Instrument Act define promissory note? तो आंसर है यहाँ पे सेक्शन 4. ओके, देखिए, सेक्शन 4 Negotiable Instrument Act define promissory note as an instrument in writing containing unconditional undertaking to pay a specified amount. Next, 83. What type of share gives holder preferential right to dividend and repayment capital? तो आंसर है प्रेफरेंस शेयर. ओके, देखिए, प्रेफरेंस शेयर ग्रांट शेयर होल्डर preferential right over equity shareholder concerning dividend and capital repayment case of liquidations. Next, 84. What is the term of difference between the face value and issued price of share when issue at higher price? तो आंसर है यहाँ पे प्रीमियम. ओके, when the share is issued at price higher than its face value, the additional amount is called as a premium. Next, 85. Which money market instrument is issued by bank and carries fixed maturity period up to 1 year? तो आंसर है यहाँ पे certificate of deposit. Okay, certificate of deposit are short term instrument issued by bank with the fixed maturity period from 7 days to 1 year. Next, 86. Which of the following is not a characteristics of treasury bill? तो आंसर है यहाँ पे long term maturity. ठीक है, the treasury bill are short term debt instrument typically maturing with 91, 182 or 364 days and are issued by government. Next, 87. What is the primary benefit of zero balance account? तो zero balance account मतलब no minimum balance payment requirement. Okay, देखो, zero balance account customer to operate their account without need maintain minimum balance, providing flexibility to low income or specified customer group. Okay. Next, 88. Which type of account is specifically designed for minor? Answer है minor saving account. Okay, under the age 18. Next, 89. What is the term for daily limit or cash withdrawal set by bank for an ATM card? तो आंसर है यहाँ पे daily limit. Okay, देखिए, the daily limit restrict the maximum amount card holder can withdraw from an ATM in single day, ensuring security and managing liquidity. Next, 90. What does the term ATM interchange fee refers to? A fee charged for using ATM of another bank. Okay, देखिए, an ATM interchange fee is imposed when the customer use ATM of bank another their own, often limited to certain number of free transactions. Okay. Next, 91. Which type of check can be converted into demand draft by issuing bank? आंसर है यहाँ पे banker check. Okay, देखिए, banker check is issued by bank behalf of the customer and is treated as an equivalent to the demand draft. Okay. Next, 92. What does stale check mean? तो stale check मतलब क्या होता है? A check presented after the validity period. Okay. Next,
93. Which of the following is an example of Negotiable Instrument Act? तो आंसर है Promissory Note. Promissory Note is a negotiable instrument act and it is a freely transferable and involve promise to pay a certain amount. Next, 94. Under the Negotiable Instrument Act, what does holder in due course means? तो holder in due course मतलब क्या होता है? A person who acquire negotiable instrument good faith. तो यहाँ पे देखो, a person who accept on a good faith and for the consideration. Next, 95. Which type of debenture provide fixed charge on company asset? तो आंसर है secured debenture. देखिए, secured debenture are backed by fixed charge of the company assets, ensuring security for debenture holder in case of default. Next, 96. Which financial instrument is issued by company to raise fund without creating ownership dilutions? आंसर है यहाँ पे debenture. Debenture enables company to borrow fund from the public or institution without offering ownership stake, preserving shareholder control. Okay. Next, 97. Which instrument is used for interbank borrowing very short duration, usually overnight? तो आंसर है यहाँ पे कॉल मनी. कॉल मनी वन डे के लिए होता है. Okay, call money facility overnight interbank leading to the mid short term liquidity requirement. Next, 98. What is the maximum maturity period for commercial paper in India? तो आंसर है 364 days. Okay. Commercial paper unsecured short-term debt instrument by issued company with the maturity up to 364 days. Next, 99. Which instrument is primarily used by the government to manage short-term liquidity requirement? तो आंसर है यहाँ पे treasury bill. Okay. Next, 100. Which of the following is not a feature of money market? तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस है. High liquidity, short maturity, सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड लो रिस्क. तो आंसर है सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है. द मनी मार्केट ऑपरेट ओवर द काउंटर बेसिस विथ नो सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अनलाइक द स्टॉक मार्केट. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यू अपन सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.